2.6, a train starts from rest. It means the initial velocity is 0. With an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका एक्सीलरेशन है 0.5 मीटर per second square. Find its speed in kilometer per hour. We have to find the speed in kilometer per hour, and it will obviously the final speed, क्योंकि हमें स्टार्ट में पता है रेस्ट से स्टार्ट हुई है और वो इनिशियल इसकी स्पीड थी. When it has moved through 100 meter, जब वो 100 मीटर तक मूव कर जाए, it means the distance is 100 meter. We have to find Vf. The formula is Vf, Vi, A and S. We have only third equation of motion. 2as is equal to Vf square minus Vi square, and we have to find this Vf. It will be equal to 2as plus Vi square two times acceleration is 0.5 and the distance is 100. And initial velocity was 0 square. It will be equal to 100. Vf square is 100 and we have to find Vf. Taking square root on both sides, we will get Vf is equal to 10 and the unit is meter per second. Now we have to write the answer in kilometer per hour. To convert meter per second into kilometer per hour, we multiply it with 3600 and divide it by 1000. We will get 36 kilometer per hour. This will be our final velocity. 2.7, a train starting from rest. एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, means initial velocity is 0, accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच जाती है इन 2 मिनट्स में. रेस्ट से स्टार्ट हुई, लेट्स एक स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, वहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की और 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करना शुरू कर देती है. इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स. इसी स्पीड पे 5 मिनट्स तक, फर्दर 5 मिनट्स तक वो मूव करती रहती है. फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. उसके बाद उसमें रिटार्डेशन आता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होती है. एंड इज स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स. और फर्दर 3 मिनट्स के बाद वो स्टॉप कर जाती है, वापस रेस्ट पे आ जाती है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने वो फाइंड करना है. फर्स्ट द गिवन डेटा is a train starting from rest. It means initial velocity is 0 meter per second, accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour. Final velocity उसकी हो गई है 48 km
पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट्स में. 48 इंटू 1000 ओवर 3600, you will get 13 point, इसको आप निचली लाइन में लिख लें because we do the graphical solution on the right. 13.333 meter per second in 2 minutes. Time is 2 minutes, which is equal to 120 second. It travels at this speed for 5 minutes. इसी speed के ऊपर v is equal to 48, or you can write directly as 13.333 meter per second. At this speed for 5 minutes. इसी speed पे वो 5 minutes तक मूव करती रहती है, and 5 minutes will be equal to 300 seconds. Finally it moves with uniform retardation. उसके बाद उसमें retardation आना शुरू हो गया, and stop after 3 minutes. 3 minutes के बाद वो stop कर जाती है, which is equal to 180 second. किस स्पीड पे वो मूव कर रही थी? 13.33 पे मूव कर रही थी, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, और उसकी फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट पे पहुंच गई है. वी एफ इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास 3 सेट बने डेटा के. पहला सेट है जिसमें ट्रेन रेस्ट पे थी, उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, वेलोसिटी अटेन कर ली 13.33 मीटर पर सेकेंड 2 मिनट्स में 120 सेकेंड में. उसके बाद इसी वेलोसिटी के ऊपर ये 5 मिनट्स तक चलती रही है. फिर उसके अंदर रिटार्डेशन आया है. रिटार्डेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इसी वेलोसिटी से, 13.33 से, और 3 मिनट्स के बाद वो रेस्ट पोजीशन पे पहुंच गई है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस. एक डिस्टेंस इसने इस पोर्शन में कवर किया है 0 से 48 की स्पीड तक 2 मिनट्स के अंदर. दूसरा डिस्टेंस इसका कवर हो रहा है 5 मिनट्स के लिए, और तीसरा डिस्टेंस इसका कवर हो रहा है 3 मिनट्स के लिए. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड 3 डिस्टेंसेस, S1, S2 एंड S3. फॉर्मूला वी कैन कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड इंक्रीज़ कर रही है. तो उसके लिए हम S इज़ इक्वल टू वी टी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए थी. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कब आएगा? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही होगी. इट मीन्स वी विल यूज़ ओनली वन फार्मूला टू फाइंड S1, S2 एंड S3. S is equal to V average multiply by time taken. Solution. फर्स्ट पार्ट के लिए इसको सॉल्व करते हैं. S1 is equal to V average into time taken. एवरेज दो नंबर्स की क्या होती है कि उन दो नंबर्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें. वी हैव 2 वेलोसिटीज़, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. हम इन दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, वी गेट द एवरेज वेलोसिटी. सो 0 प्लस 13.333 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी होगी ये एवरेज वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय इट्स टाइम टेकन विच इज़ 120 सेकेंड.
when you solve this you get 799.98. S1 is 799.98 meter. Now again we use the same equation. S2 is equal to V average multiplied by time taken. सेकेंड पोर्शन के लिए वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग नहीं है. अगर यूनिफॉर्मली चेंजिंग हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो उस टाइम पे हम इन दो नंबर का, दो वेलोसिटीज़ का उसकी एवरेज लेंगे. लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनिशियली भी वही वेलोसिटी है और फाइनली वेलोसिटी उसकी भी वही है. सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज S is equal to VT और ये V कांस्टेंट वेलोसिटी है. Now we put V is equal to 13.333 multiply by time taken is 300 seconds. It is equal to 3999.9 meter. This is our S2 and this is S1. Now for the third portion we again apply the formula V average multiply by time taken. Third portion में initial velocity is 13.3 and the final velocity is 0 for 180 seconds. Now it is equal to 13.333 plus 0 over 2 multiply by 180 seconds. So our S3 will be 1199.97 meter. Finally, total distance is equal to S1 plus S2 plus S3. S1 is 799.98, S2 is 3999.9, S3 is 1199.97. It is equal to 5999.92, and when we round it off we get ST is 6000 meter. So the total distance traveled by the train during the given time interval is 6000 meter. We can solve this problem graphically also. We have to find the total distance. ग्राफ से total distance या distance traveled हमें speed time ग्राफ के थ्रू मिल सकता है. इसलिए हम इस given values का speed time ग्राफ बनाएंगे.
A train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity 48 km per hour in 2 minutes. This is speed axis, this is time axis. रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है, स्पीड उसकी ज़ीरो है और 2 मिनट्स में वो पहुंच जाती है 48 किलोमीटर पर आवर तक. इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स. इसी स्पीड पे 48 पे वो 5 मिनट्स तक रहती है. ये दीज आर और 5 मिनट्स. 5 मिनट्स तक उसी स्पीड पे है. इसका मतलब ये है कि 2 मिनट्स से लेके उसमें फर्दर हम 5 मिनट्स ऐड करेंगे. ये एक्चुअली 5 नहीं है, ये 7 है. दिस वैल्यू इज़ फॉर 7, 8, 9 and 10. You can take in this way. Finally, it moves with uniform retardation and it stop after 3 minutes. 3 मिनट्स के बाद वो स्टॉप हो जाती है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बाद. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ 7 में 3 ऐड करें, यू रीच 10 मिनट्स. और इसकी रिटार्डेशन हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ीरो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है. दिस इज़ अवर ग्राफ. इट इज़ अ ट्रेपीजियम शेप. अगर हम इस एरिया अंडर द कर्व अंडर द ग्राफ फाइंड करें तो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लेंगे. वी नो द शेप ऑफ दिस एरिया इज़ ट्रेपीजियम and the area of trapezium is 1/2 sum of parallel sides multiply by height. So area will be equal to distance traveled and it is equal to 1/2 sum of parallel sides. एक साइड है हमारी 10 की और दूसरी साइड है 2 से लेके 7 तक, मीन्स 5. 10 plus 5 multiply by height. इस ट्रेपीजियम की हाइट है, दिस इज़ the height, it is 0 to 48 means 48. But note that these units are not similar. Time is in minutes and the speed is in kilometer per hour. हमें इन दोनों यूनिट्स को सेम रखना है. इसलिए हम बेहतर यही है कि एसआई सिस्टम में चले जाएं और डायरेक्टली एसआई सिस्टम में वैल्यूज़ पुट करें. ये 10 मिनट्स है जबकि ये स्पीड हमें आवर में आ रही है, 48 किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ रही है. इसका मतलब है ये वैल्यूज़ हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज़ करेंगे. वी कन्वर्ट दीज वैल्यूज़. और हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे देखा है कि ये 10 मिनट्स सेकंड्स में कितने बनते हैं. और आपकी ये जो सेकंड वैल्यू है, दिस इज़ ओवर 5 मिनट्स डिस्टेंस और 5 मिनट्स लेंथ. 10 minutes is 600 seconds and this length is 5 minute is 300 seconds. So we put 600 plus 300 multiply by height, which is 48 kilometer per hour, and in meter per second it is 13.33 meter per second. When we solve this, we get this portion is 600 plus 300 is 900 divided by 2 is 450 multiplied by 13.333. So the total distance covered will be 5999.85, which is approximately 6000 meter. So the distance calculated graphically and using the equations is same.
Problem 2.9. When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हुई है 96 से 48 तक और टाइम डिस्टेंस उसने कवर किया 800 मीटर. हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ट्रेन फर्दर कितनी मूव करेगी कि वो रेस्ट पे पहुंच जाए, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट. यानी कि जितनी रिटार्डेशन हो रही है 96 से 48 तक उसी रिटार्डेशन के साथ वो रेस्ट पे पहुंच रही है. नाउ वी राइट द डेटा. Given data is the speed of train decreases from 96. VI is 96 kilometer per hour, and when we convert 96 kilometer per hour into meter per second we get 26.667 meter per second to 48 kilometer per hour. VF is 48 kilometer per hour, which is equal to 13.333 meter per second, and the distance covered is 800 meter. How much further will train move? This is the distance 1 during the interval VI to VF, and how much further the train will move. We have to find the second distance before coming to rest, and for this distance S2 the final velocity will be 0. We have to find S2 when VF is equal to 0. Formula: we have VF VIS and need to find the second distance, and it is given the retardation is constant, so we need to find the retardation first. रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए, नेगेटिव एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास VI VF S तीन चीज़ें. A हमने फाइंड करना, इट मीन्स वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. सॉल्यूशन यूजिंग इक्वेशन 1. we have to find A, which will be equal to VF square minus VI square over 2S. We put the values 13.333 square minus 96, sorry not 96, in meter per second it is 26.667 square over 2S, and the distance is 800. We get the acceleration is negative 0.334 meter per second square. Since it is retardation, speed कम हो रही है इसलिए acceleration भी negative आया. Now we use this retardation because it is given retardation is constant. इसी retardation के साथ हमें distance find करना है जब हमारी final velocity 0 हो जाए. इसका मतलब है initial velocity है, इसकी velocity कम हो के 13.33 हमारी initial velocity होगी और final velocity उसकी हो जाएगी 0. So we again use the equation 1. Now the distance will be VF square minus VI square over 2A. Now VF final velocity is 0 and the initial velocity is 13.33
333 square over 2 times of negative 0.334. We get S is equal to 266.6 meter. So the train will further cover the distance of 266.6 meter to come to the rest पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसको इस दौरान तक वो 266.6 मीटर डिस्टेंस फर्दर कवर कर लेगी. Now the problem 10 in the above problem means 2.9. Find the time taken by the train to stop after the application of brakes. जब ब्रेक्स अप्लाई की हैं उस वक्त से लेके स्टॉप होने तक कितना टाइम कंज्यूम कर रही है ट्रेन. अगर हम पिछले प्रॉब्लम का ही डेटा यूज़ करें, ब्रेक अप्लाई हुई है, स्टार्ट से ही ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो गई. इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 96 किलोमीटर पर आवर और वो यू कैन टेक इट एज 26.667 मीटर पर सेकेंड. टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, स्टॉप होने तक उसको कितना टाइम लगा है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड तक आने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड था. वी हैव टू फाइंड दिस टाइम. फॉर्मूला वी हैव VF, VI, T and we also T is to be found and we also know the acceleration हमने फाइंड किया है विच इज़ रिटार्डेशन -0.334 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now we can use first equation of motion. VF is equal to VI plus AT. Using this equation we have to find time will be equal to VF minus VI over A. VF is 0, initial is 26.667 over acceleration is minus 0.334. So the time taken will be 80 seconds. ब्रेक अप्लाई करने से लेकर स्टॉप होने तक उसको टोटल 80 सेकंड लगे.